हेलो एंड वेलकम। आज आम सुप्रीम कोर्ट विषय में पढ़ा। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन रो पार्ट 5 रे दिया जायछि और आर्टिकल 124 127 रे दिया जायछि। एटा कॉमन फैक्ट ना। गोटे मेन कथा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रु बहुत गुड़ा इंस्टीट्यूशन आम कॉन्स्टिट्यूशन रे आम इंस्पिरेशन हिसाब रे नीचु। सुप्रीम कोर्ट was envisioned in the Government of India Act 1935 by the Britishers. But gote important kotha that we should all remember that the today's Supreme Court has much greater jurisdiction than the Supreme Court that was given as per the Government of India Act 1935. Okay. Now understand the next concept, that is our whole judicial system is an integrated judicial system. Now integrated judicial system कौन हमें कौन बुझुछु when we say our judicial system is integrated, that is ଯେମିତି କି ଆମ ପୁରା ଦେଶର ସିଷ୍ଟମ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ ଆଉ ଭେରିୟସ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟରେ ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇଛି, ସେମିତି ଆମ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀରେ ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇନାହିଁ। ତା ମାନେ ହେଉଛି ଟୋଟାଲ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ସିଷ୍ଟମ इज वन माने गोटे चेन ऑफ कमांड रे ही चलुची, जोठिकी आम प्रथम सबऑर्डिनेट जुडिशियरी को जाऊँ, तापर पुणी अपील रे हाई कोर्ट को जाऊँ, तापर पुणी अपील रे दरकार पड़े सुप्रीम कोर्ट को जाऊँ। माने जो केसटा सबऑर्डिनेट जुडिशियरी स्टार्ट होची तार फाइनल अपील जाइए सुप्रीम कोर्ट रे शेष होची। माने हाई कोर्ट आ सुप्रीम कोर्ट एमती नुहे कि सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट रो आ हाई कोर्ट होची स्टेट गवर्नमेंट रो। it total from starting from the sessions court to the supreme court गोटे वन चेन ऑफ कमांड रे ही चलुची। से सेटा को जाय इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम जोटा कि आमे इंडिया रे फॉलो करछु। नाउ आउ गोटे सिस्टम अछि ता ना होची डबल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स। डबल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स होची जोटा कि मैं कहिली जेमति कि सेंटर रे गोटे अलगा सेट ऑफ कोर्ट्स अछि जोटा को फॉर एग्जांपल फेडरल कोर्ट्स को जाउची यूएसए रे और स्टेट मानन करे प्रोविंशियल कोर्ट्स थाई पारे। ओके से दुई जन जदि आमे प्रोविंशियल कोर्ट रे गोटे केस कहिछु ताले आमे फेडरल कोर्ट रे केस करिया पे पुन थरे मूलर स्टार्ट करिया पड़ो, जोटा कि यूएसए रे सिस्टमटा अछि आ इंडिया रे इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम अछि। बुझिले? ओके। द नेक्स्ट थिंग इज द नंबर ऑफ जजेस। वर्तमान सुप्रीम कोर्ट रे 34 द नंबर ऑफ जजेस इज 34। ओके 31 थिला जोटा कि 2019 रे बढ़ा जाई के 34 इज। नाउ जो 34 एटा इंक्लूडिंग सीजीआई। ओके नाउ देन सीजीआई प्लस 33 सुप्रीम कोर्ट जजेस। ओके नाउ ओरिजिनली नंबर ऑफ जजेस वाज 8, दैट इज सीजीआई प्लस 7 सुप्रीम कोर्ट जजेस। ओके नाउ वन थिंग टू रिमेंबर जोटा कि बहुत इनोवेटिवली पीसीएस और यूपीएससी पचारि दिए जे जो नंबर ऑफ जजेस केते रहिबे सेटा किए डिसाइड करिवो। बर्तमान जो 8 रु 31 हैला मनकर 31 रु 34 हैला और भी मझे चेंजेस हेतिबो, से डिसीजन टा किए नबो जे केते नंबर ऑफ जजेस सुप्रीम कोर्ट रे बा हाई कोर्ट रे रहिबे तार संपूर्ण प्रेरोगेटिव होची पार्लियामेंट पखरे। ओके मन रहला एटा बहुत इंपोर्टेंट मन रखियो। नाउ कम टू द अपॉइंटमेंट पार्ट। कॉन्स्टिट्यूशन रे क्लियरली लिखा जाइछि जे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्रथमे प्रेसिडेंट अपॉइंट करिवे। ओके देन प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विथ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सहित कंसल्ट कला परे अदर जजेस मन को अपॉइंट करिवे। एती कथा कॉन्स्टिट्यूशन रे लिखा जाइछि ना। तो पॉइंट आछि ए जो प्रेसिडेंट कंसल्ट करिवे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सहित से जहां भी कंसल्ट करिवे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जहां भी एडवाइस देबे कौन सही एडवाइस सही कंसल्टेशन इज इट मैंडेटरी और नॉट, माने एटा प्रेसिडेंट को ऊपर बाध्य ना नहीं। सही डिबेट को कहा जाए इट इज ए सीरीज ऑफ डिबेट दैट इज कॉल्ड इज इट द कंसल्टेशन और कनकरेंस। माने एटा केवल एटा कॉन्स्टिट्यूशन रे कंसल्टेशन विषय लिखा जाइछि ना कनकरेंस विषय भी लिखा जाइछि। माने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जहां कंसल्ट करिवे ताहा ही मान्य होबो। तारी ऊपर नंबर ऑफ जजेस केस अच्छी
जोटा कि आरंभ हो फर्स्ट जज केस रो फर्स्ट जज केस रे कहा गला जे एटा कनकरेंस नुह एटा हो कंसल्टेशन जे केवल प्रेसिडेंट सीजे को सहित कंसल्ट करिवे एंड तापर इट इज अपॉन प्रेसिडेंट टू व्हाट ही वांट टू डिसाइड ही और शी वांट टू डिसाइड ओके नाउ सेकंड जज केस रे किंतु कहा गला जे एटा एक्चुअली कंसल्टेशन नुहे एटा हो कनकरेंस माने सीजे जहा कहिबे सेटा ही बाध्य आउ आउ गोटे इंपोर्टेंट कथा कहा गला जे एटा नॉट जस्ट ओनली द सीजे कैन डिसाइड बट सीजे आउ दुई जन सुप्रीम कोर्ट जज को सहित कंसल्ट कला परे जाई कौन से प्रकार रेकमेंडेशन प्रेसिडेंट को देबे ओके सेउटू स्टार्ट हला कॉलेजियम सिस्टम जे गोटे कॉलेजियम तैयारी करा गला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आउ टू सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज को सहित जी रेकमेंड करिवे ऑन द अपॉइंटमेंट थिंग्स ओके ना थर्ड जज केस रे एटा को आहुरी बेटर करबा पई आहुरी इंस्टीट्यूशनलाइज करबा पई ए कॉलेजियम को सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सुप्रीम कोर्ट जज सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज को माने विस्तार करा गला ओके ना गोटे इंपोर्टेंट कथा होची जे ए जो कॉलेजियम अछि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 जजेस इवन इफ टू जज गिव एडवर्स ओपिनियन माने गोटे रिकमेंडेशन ऊपर चर्चा चलछि आउ इवन इफ टू जज भी मना कर देले से गोटे एडवर्स ओपिनियन देले देन आल्सो टू जज देला परे भीतर तीन जन ता सपक्ष रे अछंती बट देन आल्सो द रिकमेंडेशन will not be sent to the president okay now third judge case pore 99th constitutional amendment 2014 रे एनजैक बिल आसी एनजैक होची नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिशन ना काहे के एनजैक बिल आसीला तार कारण होची इट इज द ओनली सिस्टम वेयर जजेस अपॉइंट जजेस ओके ना ता जुगु बहुत गुडी अलेजेड थिंग्स कहा जाउथला जे सेटे ट्रांसपेरेंसी नाही डाइवर्स पूल ऑफ टैलेंट आसी पारु नाही सेते पई जो पार्लियामेंट 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आनिले जोठी कि से गोटे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिशन रो गठन कले जोठी किछि मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट तरफ रहिबे आउ किछि जुडिशियरी तरफ रहिबे जो माने डिसाइड करिवे अपॉइंटमेंट केसेस ओके but Supreme Court declared it unconstitutional in the fourth judge case 2015 on the basis of that the NJAC this institution undermines the primacy and the independence of the judiciary okay because there are many reasons behind that because government is the largest litigator in the judiciary then how can government have anything to say on the appointment of things okay now another thing is among the judges मानको भितरु किए सीजेआई हेबे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रो नियुक्ति केमति करा जिवो आगरो एटा गोटे कन्वेंशन बेसिस रे होउतला जोठी कि सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वाज chosen as the chief justice of India okay but this convention was violated in 1973 and 1977 when Justice A.N. Ray and Justice M.U. Beg were made Chief Justice of India when there were more senior most judges available. So in the second judge case 1993, Supreme Court clarified that only and only the senior most judge will be appointed in the CJI. So now this is not a convention, rather this is mandatory. Okay. Now come to the qualification. So for the qualification, one must be citizen of India and judge of High Court for 5 years. High Court रे से 5 वर्ष होला जज थिबे और High Court रे 10 वर्ष होला एडवोकेट थिबे or he must be an distinguished jurist. Okay. Now one major thing is the minimum age criteria. Okay. Constitution रे कौनसी प्रकार minimum age criteria for Supreme Court or High Court judge दिया जाए नहीं. Next is salaries. The salaries is decided
by the parliament. Now parliament ଚାହିଁଲେ law change କରିପାରିବ ଆଉ ତାଙ୍କ salary change କରିପାରିବ. Okay. The next thing is that we should remember that there is no fixed tenure. Okay. କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫିକ୍ସ ଟେନ୍ୟୁର ନାହିଁ, କାରଣ ନା ଆ ଉପରେ କିଛି ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ ଯେହେତୁ କୌଣସି ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ ନାହିଁ and there is only a maximum age of 65 years age, so there cannot be a fixed tenure. That is the thing. Okay. Now the next thing is the removal. Supreme Court ଆଉ High Court judge ମାନଙ୍କର removal ପାଇଁ କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି, ଯାହା ହେଉଛି proved misbehavior or incapacity. Either ତାଙ୍କ misbehavior proved ହେଇଥିବ, ନହେଲେ it is certain that they are not in a capacity to adjudicate justice. ନା ତାର procedure ହେଉଛି that both the houses ରେ special majority one, जोटा कि 2/3 of members present and voting and 50% of the strength must be present. But the thing is, যেহেতু আমার judiciary is a pious institution, so Supreme Court thought that there should be an in-house inquiry. Okay. Okay, in-house inquiry. So that's why they brought the Judges Inquiry Act. Now Judges Inquiry Act अनुसार कौनसी प्रकार जदि proved misbehavior or incapacity रो allegation आसिला, then any removal motion can be brought in any of the houses, provided in the Lok Sabha 100 members should support it and the Rajya Sabha 50 members should support it. Then the speaker or chairman of Lok Sabha or Rajya Sabha respectively may or may not admit it. Okay, there is a discretion. If they admit it, then then a 3-member committee will be formed. गोटे 3-member committee गठन करा जिवो और से 3-member committee रे किए थिबे, Chief Justice of India CJI or judges of any judge of the Supreme Court and Chief Justice of any High Court and a distinguished jurist. If they give a green signal that yes, the allegations are correct, then through special majority in the both houses, motion will be passed with special majority too, and president will address the house and remove that particular judge. Okay. Now another concept is ad hoc judges. What are ad hoc judges? एमिति हेई पारे जे सुप्रीम कोर्ट रो जो कोरम अछि, जेति के मिनिमम नंबर ऑफ जजेस दरकार टू smoothly adjudicate justice. If that quorum is not sufficient, then हमको तो judges appoint करबा पड़ियो, and there are no permanent judges right now. So Chief Justice of India कौन कर परिबे ना, in consultation with president को सहित से consult करिवे, and जो हाई कोर्ट रो से जज को अपॉइंट करबा को चाहउछंती से हाई कोर्ट रो चीफ जस्टिस को सहित भी कंसल्ट करिवे, and after that they can appoint any judge of high court as the ad hoc judges of the Supreme Court. But there is a small criteria that same judge of the high court should qualify all the criteria of becoming a Supreme Court judge. Okay. Now an important thing to remember that an ad hoc judges enjoys all privileges and he is deemed to be a Supreme Court judge. But any retired judge any retired judge doesn't consider to be deemed to be Supreme Court judge. Okay. Now the next thing is seat. Constitution of India देइछि क्लियरली मेंशन करा जाइछि कि वर्तमान जो सुप्रीम कोर्ट सीट होछि सेटा दिल्ली रे, बट सेठी एहा भी मेंशन करा जाइछि जे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जदि चाहउचंती ड्यू टू एनी रीजन he can consult with president and he can deem any other places as the seat of Supreme Court. Okay. But any other judiciary, any other part of the judiciary, that is high court or subordinate court,
cannot force Chief Justice of India on this thing. It is the sole discretion of the Chief Justice of India. Okay. Now another thing is to remember that Supreme Court variety of cases could adjudicate correct. But among those cases also, there is a hierarchy of importance. Okay, and at the top, there the most important things, the most important cases are the constitutional cases. The constitutional cases कौन? Those cases सही cases गुड़ाको जो गुड़ाको constituents constitution ର nuances ଉପରେ discuss करे ଆଉ constitution ରେ जो vagueness ଅଛି ତାକୁ clear କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ. ଓକେ, any substantial matter of law ଉପରେ discuss କରେ ସେଗୁଡାକୁ constitutional cases କୁହାଯାଏ. ତ ସେଇ constitutional cases ଯେହେତୁ ସେଗୁଡାକ ଅଧିକ important, ତେଣୁ ତା ପାଇଁ minimum number of bench strength should be 5 and जो केसेस गुड़ाक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस थ्रू आसे जोटा को आम आगू पढ़ा जाऊँ खाली मन रख प्रेसिडेंशियल रेफरेंसेस थ्रू जो केसेस गुड़ाक आसे से गुड़ाक भी मिनिमम बेंच स्ट्रेंथ इज 5. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज द जुरिस्डिक्शन. जुरिस्डिक्शन माने पावर. जुरिस्डिक्शन तांकर पावर केते, तांकर स्कोप केते सुप्रीम कोर्ट रो. तो सुप्रीम कोर्ट हैज मेनी जुरिस्डिक्शन and these are majorly divided into 4 parts, that is original jurisdiction, writ jurisdiction, advisory jurisdiction and the appellate jurisdiction. Now original jurisdiction कौन? What do you mean by original? Original माने होची कि Supreme Court has the can hear all those things in the first instance. Now मने पका कि प्रथम आम कौन कहूँ कि आमर जुडिशियरी गोटे इंटीग्रेटेड जुडिशियरी जो कि जदि कौन सी प्रकार डिस्प्यूट एराइज होची आम प्रथम कौटी जाऊँ, आम प्रथम सबऑर्डिनेट जुडिशियरी को जाऊँ. सबऑर्डिनेट जुडिशियरी रू जितेबाला आमको लगुच वी आर नॉट सैटिस्फाइड देन आम हाईकोर्ट को जाऊँ, देन आम सुप्रीम कोर्ट को जाऊँ. माने ऑन अपील बेसिस आम सबऑर्डिनेट रू हाईकोर्ट रू सुप्रीम कोर्ट को जाऊँ. बट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शनल केसेस सही केसेस होची जो थरे कि आमे डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को कौन करि परिबा, सुप्रीम कोर्ट पाखरे आमे जाई के अपील करि परिबा. हमको से चेन ऑफ कमांड को फॉलो करबा को पड़िबनी जे प्रथमे सबऑर्डिनेट को जिबा को पड़िबो, तापर हाई कोर्ट को जिबा को पड़िबो, तापर हमको जाई के सुप्रीम कोर्ट को जिबा को पड़िबो. आमे डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को जाई परिबा. आ एई सब केसेस रे सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली हम केसेस को सुनि परिबो. नाउ ए ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कोउटा जोठी कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली केसेस गुड़ा को ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस रे ही सुनि पारि. ओके, से गुड़ा को होची एनी डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. यदि राज्य और केंद्र भितर कौन सी प्रकार डिस्प्यूट एराइज होची ताहले से केसेस गुड़ा को केवल सुप्रीम कोर्ट सुनि परिबो, आउ केही सुनि परिबे नाही. आउ एनी डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स एंड स्टेट्स, कौन सी दीटा स्टेट भितर जो डिस्प्यूट क्रिएट होची से गुड़ा को भी केवल सुप्रीम कोर्ट ही सुनि परिबो. तेणु ये केस रे सुप्रीम कोर्ट रो ए दिटा केस रे जे सेंटर ऑफ स्टेट और स्टेट एंड स्टेट भितर जेतो डिस्प्यूट एराइज होची सेथिरे सुप्रीम कोर्ट रो ना जस्ट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन अछि बट आल्सो एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन अछि. दैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट कैन हियर दीज केसेस ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस and also no other than Supreme Court can hear these cases. That is the thing. Okay, now but there is an exception to these things, that any political questions, okay, जेहेतु सुप्रीम आम देश गोटे डेमोक्रेटिकली गोटे डेमोक्रेटिक कंट्री, देन any dispute between center and state or state and state can also be political in nature, but those political questions will not be entertained by the Supreme Court. That is the thing. आउ कौन जिनस गुड़ाक ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन अंडर रे आसु ना से गुड़ाक आमको देखा पड़ो. एटा होची सिटीजन ऑफ स्टेट और सेंटर भितर झगड़ाटा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भितर आसु ना. तामाने यदि गोटे सिटीजन ऑफ स्टेट और सेंटर भितर झगड़ा होची, देन ही हैज टू फॉलो देयर चेन ऑफ कमांड, ओके, फ्रॉम द सबऑर्डिनेट देन हाई कोर्ट देन सुप्रीम कोर्ट.
एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रिटी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन अंडर आसुना ही मन रख एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रिटी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन अंडर आसुची जोटा कि मैं आगु को देखिबा एनी इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एटा सबुठ इंपोर्टेंट कि दीटा स्टेट भितर जमी ओडिशा और आंध्र प्रदेश भितर डिस्प्यूट अच्छी ओडिशा छत्तीसगढ़ भितर महानदी को नहीं डिस्प्यूट अच्छी से भाया कौन वाटर डिस्प्यूट केसेस गुड़ाक सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन कर इट इज क्लीयरली मेंशन्ड in the constitution it has been the power has given power on this interstate water dispute has been given to the parliament and parliament has exercised this power to adjudicate some laws which has given power to interstate water dispute tribunal and not to the supreme court so supreme court ro original jurisdiction under re interstate water dispute asu nahi it is very 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 important and also the finance commission matters माने फाइनेंस कमिशन जदि किसी रेकमेंड कला कौन से प्रकार रिविजन और कौन से प्रकार रिफॉर्म दैट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट बेस्ड ऑन द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन द नेक्स्ट थिंग इज द ऑर्डिनरी डिस्प्यूट ऑफ कमर्शियल नेचर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट ओके सेंटर स्टेट भीतर जदि किसी कमर्शियल नेचर रो डिस्प्यूट अछि सेटा भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन अंडर रे आसु नाही and this is very 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 important when we think of any dispute between center and state न्यूज रे जहाँ मोस्ट कॉमनली आसे सेगुड़ा कौन आसे जे सेंटर हमको आमर ड्यूज दो ना स्टेट अक्यूज करे सेंटर अक्यूज करे दैट दे हैव नॉट डन द प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द थिंग्स but here it is clearly mentioned that the recovery of damages by a state against the center that will be not entertained under the original jurisdiction of the Supreme Court. Now the next and the most important jurisdiction is the writ jurisdiction. Writ jurisdiction, there are various a number of writs which we will discuss under the fundamental rights, that is under the article 32. But here a fair surface level of idea, that is Supreme Court has original jurisdiction on writ. Okay, Supreme Court रो original jurisdiction अच्छे ता माने जे आमे Supreme Court को directly approach करी परिबा on the writ issues. Okay, but Supreme Court doesn't have the exclusive jurisdiction of writ as it was on the case of the original jurisdiction. माने जेमति ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन रे जहा जहा आसुची सेगुडा को केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ही एंटरटेन करि परिबो सेमिति रीड जुरिस्डिक्शन रे नाही रीड जुरिस्डिक्शन रे सुप्रीम कोर्ट सहित हाई कोर्ट मध्ये एम्पावर्ड टू एंटरटेन द रीड जुरिस्डिक्शन नाउ देयर इज आल्सो एन इंपोर्टेंट थिंग that has been asked in the various examinations, that is the nature of writ jurisdiction in the case of Supreme Court and in the case of High Court are basically different, fundamentally different. Okay, Supreme Court रे जो writ jurisdiction अच्छी सेटा majorly and only exclusive to the fundamental rights. माने भल से बुझंतु एक कथाटा कि Supreme Court is the apex body. Okay, the total integrated judiciary we have at the apex resides the Supreme Court. So Supreme Court ଯେତେବେଳେ decide କରିବ କୌଣସି issue ଉପରେ it must be something greater, something more important, more necessary than the other things that are there. So ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ଡିଭାଇଡ୍ କରାଯାଇଛି ଯେ ହାଇ କୋର୍ଟ आउ सब रिट गुड़ाक तो एंटरटेन कर समस्त प्रकार रिट बट सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल रिट को ही एंटरटेन कर ओके नाउ नोट ये बहुत इंपोर्टेंट नोट जोटा कि मुझे भी आगुरी जान नी पढ़ला पर जानी कि पार्लियामेंट जदि चाहिए इफ पार्लियामेंट डिसाइड्स देन इट कैन एम्पावर द सुप्रीम कोर्ट टू इश्यू अदर काइंड ऑफ रिट्स ओके दिस इज वेरी 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 इंपोर्टेंट ओके नाउ द थर्ड काइंड ऑफ jurisdiction is that is appellate jurisdiction जोटा कि आमे नॉर्मली आम डे टू डे लाइफ रे आमे देखु जे कौनसी प्रकार डिस्प्यूट हैला परे कौनसी भी लोक से प्रथमे लोअर जुडिशियरी को जाए तापर हाई कोर्ट को जाए तापर सुप्रीम कोर्ट को जाए तो से appellate jurisdiction केमिति काम करे इन डिफरेंट काइंड ऑफ केसेस कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस संवैधानिक केसेस रे से appellate jurisdiction केमिति काम करे सिविल केसेस रे appellate jurisdiction केमिति काम करे आ क्रिमिनल केसेस रे appellate jurisdiction केमिति काम करे सेटा हमें एठी देखिबा
अच्छा अपेलेट जुरिस्डिक्शन माने होची जे कौनसी कौनसी पार्ट ऑफ जुडिशियरी अपील रे केमिति केस गुडा सुनिबो ता माने होची जे जेमिति कहिलु मु जे आमे लोअर जुडिशियरी को गलु तापर आमे अपील रे हायर जुडिशियरी गलु माने लोअर जुडिशियरी रे जहा निष्पत्ति करा गला सेथिरु जदि आमे सहमत नाहु ताहेले आमे हायर जुडिशियरी को गलु हायर जुडिशियरी को आमे ऑन अपील गलु सेहित पई कहा जाय एटा होची अपेलेट जुरिस्डिक्शन ओके आमे ऑन अपील रे हायर जुडिशियरी को जाउछु सो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस रे गोटे क्राइटेरिया होची कि हाई कोर्ट रु जदि आमे सुप्रीम कोर्ट को जीवा को चाहूँ ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस देन हाई कोर्ट हैज टू सर्टिफाई दैट से जो केस जोटा आमे करिछु सेटा कंसीडर्स सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ माने एटा को आमे एमिति बुझी परिबा जे गोटे एग्जांपल बुझी परिबा कि मने करंतु कोनसे गोटे हम एटा कॉन्स्टिट्यूशनल केस विषय कह जाउची बट मु गोटे क्रिमिनल केस रो एग्जांपल दी बुझौछु जे जणे हत्या करिछि आउ मर्डर करछि तेनु मर्डर रे गोटे प्रोसेस थिबो जे को वेपन रे से मर्डर करछि को प्लेस रे से मर्डर करछि को सर्कमस्टेंसेस से मर्डर करछि सो दिस ऑल दिस इन्फॉर्मेशन कि से को प्लेस रे मर्डर करछि को वेपन रे मर्डर करछि आ को सर्कमस्टेंस रे मर्डर करछि सेगुडा को होछि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट माने एगुडा कहूँ फैक्ट जे हाँ से केसेस रे ये फैक्ट थिला आ से फैक्ट बेसिस रो लोअर जुडिशियरी गोटे जजमेंट प्रोनाउंस करछंती आ हाई कोर्ट भी हायर जुडिशियरी हाई कोर्ट भी गोटे जजमेंट प्रोनाउंस करछंती नाउ जेतेबेले केसटा सुप्रीम कोर्ट को पाखरे जाई पहुंचीबो सुप्रीम कोर्ट ए फैक्ट ऊपर चर्चा करिवेनी माने को फैक्ट ए फैक्ट गुडा को सब डिसाइड हेई सारतिबो वेरीफाई हेई सारतिबो इन द लोअर जुडिशियरी इटसेल्फ दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम दैट लोअर जुडिशियरी रो गोटे बेसिक पार्ट अछि जो थरे कि से प्रथमे ये जो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट गुडा को अछि से गुडा को वेरीफाई कर दबो जेमति से सब जिंसर से गुडा को नेक्स्ट वेरिफिकेशन और हायर जुडिशियरी रे आवश्यकता पड़िबो नाही सेहित पई एठे कहा गला कि हाई कोर्ट सर्टिफाई करिवो जे एटा कोनोसी प्रकार सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को कंसीडर करूछि ओके नाउ सिविल केसेस रे भी सेही भले कथा हबो जे हाई कोर्ट सर्टिफिकेट देबे कि इधर इट इज ए सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ और इट नीड्स सुप्रीम कोर्ट डिसीजन माने कोनोसी बेटर केस हिथिबो नाउ जो कथा हमको मने रखिबार अछि सेटा होछि सिविल केसेस रे क्षेत्र रे आगरु थिला कि गोटे 20,000 रुपीज रो क्राइटेरिया थिला जे इफ योर सिविल केस deals with anything that is more than 20,000 okay then only it will be it can be appealed in the Supreme Court but that was removed by 30th Constitutional Amendment Act 1972 30th Constitutional Amendment Act 1972 okay now the next thing is criminal appellate jurisdiction now take भल से एटा बुझिबा जे एमिति देखंतो कि आमर टोटल जुडिशियल सिस्टम गोटे बेसिक फिलोसफी ऊपर चले कि देयर शुड बी एनफ चेक्स एंड बैलेंसेस सो दैट नो वन शुड गेट ए बैड जस्टिस और शुड गेट इनजस्टिस ओके सो जदि एट तीनटा केस अछि गोटे होछि जे क्रिमिनल सेम अछि जे हाई कोर्ट सर्टिफाई करिवे जे एटा सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ और द सुप्रीम कोर्ट मस्ट डिसाइड इट देन सुप्रीम कोर्ट को जाय परिबो बट another two criteria are there which is very important that is यदि हाई कोर्ट आगरु आक्विटल हेई सरथिबो कोनसे गोटे केस रे गोटे व्यक्ति रो माने से निर्दोष साब्यस्त हेई सरथिबो देन हाई कोर्ट रिवर्स दैट acquittal and sentence death ताको डेथ पेनल्टी दे देबे by reversing the acquittal okay and हाई कोर्ट गोटे ऑनगोइंग केस चलथिबो जो थिरे acquittal हेई नथिबो बट ऑनगोइंग केस चलथिबो ताको हाई कोर्ट निज पाखु नै आसीबे and then pronounced the death sentence okay ए दीटा तक केस रे एटा से पर्सन रो मैटर ऑफ राइट जे ता से तो किछ अन्याय हेई न जाउ जेहेतु तार acquittal को रिवर्स कराई ताको डेथ दिया जाई छी और ता केस चाली थिला ताको
death penalty दिया जाइए, it is the matter of right for that person that he can go to the Supreme Court. तापाई कौनस प्रकार certification from High Court दरकार नहीं. It is a matter of right. Now the next question is, the next thing is that the 1970 এটা ଆଗରୁ କେବଳ ଥିଲା ଯେ ଡେଥ୍ ପେନାଲ୍ଟି ଦେଲେ ହିଁ ଆମେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଯାଇପାରିବା, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ମ୍ୟାଟର ଅଫ୍ ରାଇଟ୍। ବଟ୍ 1970ରେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଏଟାକୁ ଏନଲାର୍ଜ କରିଦେଲା ଆଉ କରିକି କହିଲା କି ଇଭେନ୍ ଲାଇଫ୍ ଇମ୍ପ୍ରିଜମେଣ୍ଟ ଯଦି ଆକ୍ୱିଟାଲକୁ ରିଭର୍ସ କରାଇକି ଲାଇଫ୍ ଇମ୍ପ୍ରିଜମେଣ୍ଟ ଯାଇଥିବ ଅର୍ 10 years ଜେଲ୍ ଦିଆଯାଇଥିବ, ଦେନ୍ ଅଲସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ପର୍ସନ୍ କ୍ୟାନ୍ ଗୋ ଟୁ ଦ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଅନ୍ ଅପିଲ୍। ଓକେ, ବଟ୍ ଦ ଅଦର ଥିଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯଦି ଜଣକୁ ଡେଥ୍ ପେନାଲ୍ଟି ଦିଆଯାଇଥିବ and then High Court reverts the death penalty and acquits that person, then it is not a matter of right that he can go to appeal on the Supreme Court. Se jai paribe, but it is not a matter of right. Then High Court has to certify that. Okay. Now another important thing, that is the SLPs, special leave petition. Okay, I forgot to mention the article number. The article number is article 136, 136. Now special leave petition कौन ना एमिति बुझो कि एपर्यंत आमे जहाँ भी अपेलेट जुरिस्डिक्शन पढ़िलु सेगुड़ाक सब गोटे प्रोसेस रे जाउछि, जे सिविल लो गोटे प्रोसेस अछि, क्रिमिनल लो गोटे प्रोसेस अछि, कॉन्स्टिट्यूशनल लो गोटे प्रोसेस अछि, हाई कोर्ट थ्रू रे जिबाक पड़िबो, एई क्राइटेरिया फुलफिल करबाक पड़िबो। बट स्पेशल लीव पेटिशन रे सुप्रीम कोर्ट तांको डिस्क्रिशन यूज करिके तांको जोटा मोर इम्पोर्टेंट लागिबो सेटाको सही अपील को से एंटरटेन करि परिबे। सो इट इज ए मैटर ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स डिस्क्रिशन, इट इज नॉट ए मैटर ऑफ राइट। एटा कौनसी व्यक्तिर मैटर ऑफ राइट नु, एटा सुप्रीम कोर्ट को डिस्क्रिशन ऊपर डिपेंड करे। ओके, बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज मिलिटरी ट्रिब्यूनल एंड कोर्ट मार्शल ओके आर नॉट इंक्लूडेड ऑन द SLPs। ओके, जदि एई दीटा केस रे मिलिटरी ट्रिब्यूनल आ कोर्ट मार्शल केस गुडा को आमे SLPs थ्रू रे जाई परिबा नाही। ओके, now the scope is very wide, it considers the civil cases, criminal cases, revenue cases, finance cases, etc., all those things. Now the next thing is the advisory jurisdiction, that comes under the article 143. now mu jo kohutili je advisory jurisdiction kon je बहुत गुड़िए सिचुएशन अच्छी जो थी कि the present government finds it very difficult to pronounce any criteria or any policy decision ना सही सब केस रे जोठी लीगलिटी बहुत गुड़े बहुत वैगनेस रे अछि, बहुत क्लियर नु सेथिरे प्रेसिडेंट तांको पावर अंडर आर्टिकल 143 को यूज करिके सुप्रीम कोर्ट टू कंसल्टेशन मांगी पारिबे, सुप्रीम कोर्ट टू एडवाइस मांगी पारिबे on any question of law or fact. It fact भी included, not just question of law but also question of fact. जेमती मैं कहती जे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी, ओके, एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी that was not covered under the original jurisdiction, advisory jurisdiction under रे so president मांगी पारिबे advice from the Supreme Court. Okay, and there is also that on the first instance Supreme Court may or may not refuse, but in the second case Supreme Court must give judgment. Okay, now the next thing is that we all know that Supreme Court is a court of record. Court of record माने कौन? Court of record माने होची जे Supreme Court रे और High Court रे for the matter of fact in any court, be it the subordinate court or High Court or Supreme Court, जहाँ सब एविडेंस रखा जाउची, जहाँ सब दलील दिया जाउची, से सबु गुड़ाकर गोटे लीगल प्रेसिडेंस अच्छी। माने जदि सुप्रीम कोर्ट गोटे जजमेंट देले माने करो इन जजमेंट एक्स इन 1970, ना से जजमेंट रे जहाँ जहाँ लिखा गला एटा केवल सही जजमेंट ऊपर लागू नुह, सही जजमेंट रे जहाँ जहाँ प्रोनाउंसमेंट दिया गला ताको इश्यू करिकी आमे अन्य बहुत गुड़िए केस जीति परिबा बा हारि परिबा। दैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट को द्वारा कहा जाइथिबा गोटिए गोटिए वाक्य इज एन एविडेंशियरी वैल्यू इन इटसेल्फ, तार गोटे एविडेंशियरी वैल्यू अछि, तार गोटे लीगल प्रेसिडेंस अछि। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द पावर ऑफ कंटेम्प्ट। पावर ऑफ कंटेम्प्ट माने कोन? माने होछि यदि
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର କିଏ ଅଯଥା ନିନ୍ଦା କଲା ବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବା ହାଇକୋର୍ଟ ଫର ଦ ବା ଏନି କୋର୍ଟରେ ଓକେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ କୋର୍ଟସରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ୱିଲଫୁଲ ଡିସୋବେ କଲା ବା ଇଣ୍ଟରଫିୟର କଲା ଇନ୍ ଦ ଆଡଜୁଡିକେସନ ଅଫ ଦ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଓକେ then Supreme Court has the power to punish for those contempt. Now, important that Supreme Court can punish for Supreme Court, for High Court, and for subordinate courts. Okay, there are two kind of contempt. One is civil and another is criminal. Civil cases re just jarimana lage some fine, and the criminal cases you can go to jail. Okay. नाउ सिविल केसेस रे जदि तमे केवल सुप्रीम कोर्ट को फॉर एनी कोर्ट जदि कोर्ट को द्वारा दिया जाइथिबा एनी गाइडलाइंस और एनी गाइडलाइंस और एनी जजमेंट रो अवहेलना कलो ओके विलफुल डिसोबे कलो देन सिविल केसेस लागिबो क्रिमिनल केसेस रे टिके अधिक सिवियर हे जिवो इशूटा जोथरे कि जदि इफ यू आर स्कैंडलाइजिंग सुप्रीम कोर्ट माने तमे सुप्रीम कोर्ट बा हाई कोर्ट रो जज मानकर इंटेंट ऊपर क्वेश्चन करछो दैट दे हैव द मेलाइन इंटेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस रे इंटरफेरेंस होची देन क्रिमिनल केसेस लागि परिबो ओके नाउ the next thing is Supreme Court decides on disputes of original exclusive final jurisdiction अच्छे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन रे कौनसी प्रकार डिस्प्यूट जदि एराइज होची ताको केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ही सुन परिबो and another important thing is Supreme Court inquires into conduct of chairman and members of UPSC state PCSC and joint PCSC okay अब एडवाइस से जहाँ इंक्वायरी करी आंको कंडक्ट उपरे जहाँ भी एडवाइस देबे सेटा बाइंडिंग रही द लास्ट थिंग इज सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स देयर आर थ्री काइंड ऑफ एडवोकेट्स इन सुप्रीम कोर्ट द फर्स्ट इज द सीनियर एडवोकेट्स senior advocates are designated by the Supreme Court itself. Anyone who has substantial amount of experience in the field of law can be appointed by Supreme Court as senior advocate. But the point is, senior advocate cannot appear without advocate on record. Okay, senior advocate can only argue, but he or she cannot appear without advocate on record. So advocate on record is that person who can only file matter. Okay, ये तीन प्रकार जो advocates अछंती एथरे केवल advocates on record ही फाइल करि परिबे any matter. Okay, other advocates होचन से माने भी आर्ग्यू करि परिबे but they cannot file documents. So माने रखबार कथा होचे advocates on record commonly called as AOR can are the only types of advocates who can file matter before the Supreme. So thank you. Laxmikant jaha jaha भी थिला important जिनस Supreme Court उपरे I have tried to cover each and everything so that you can benefit from it. Thank you.